अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाजी और मेरे साथ मौजूद है हसीता जी। आज की हमारी वीडियो है, आपको बहुत हम बोर करते हैं, सुना है। आज की हमारी वीडियो, डायरेक्ट वीडियो पे जाते हैं। वीडियो का टाइटल है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इनसाइड Amazon's largest campus in the world। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। It's no coincidence that Amazon's biggest building is in India. In the southern city of Hyderabad, known as Asia's Silicon Valley, the tech giant's campus covers 9.5 acres and holds 1.8 million square feet of office space. That's 50 times the area of the Taj Mahal's mausoleum. One of the first things you notice when you walk in are some of the country-specific themes, and plenty of quotes to motivate the 15,000 employees who work here, many of whom are engineers. The building is jam-packed with workspaces for them. Even its headquarters in Seattle can't hold that number of people. Zabardast. Amazon didn't spare any expense. The cafeteria is open 24/7. There's a cricket area and even a landing pad for helicopters. Choosing India for its mega building is in line with Jeff Bezos' obsession with long-term thinking. The e-commerce giant already dominates the online retail market in much of the West. But global dominance depends on cracking the Indian market with its 1.3 billion potential customers. Thank you. It's working hard to make inroads, no matter the method. Yep, Sometimes old technology is still the best option to make deliveries. But India has been a tough nut to crack. In 2019, the government made it harder for multinational corporations to do business there. Amazon was banned from selling products from companies where it holds an equity stake. Items from the department store Shoppers Stop had to be removed, since Amazon owns part of that chain. Analysts believe the new regulation was politically motivated, designed to protect small businesses and keep shop owners happy enough to re-elect Prime Minister Narendra Modi. Eventually, Shoppers Stop relisted items through a subsidiary, but this just goes to show that it hasn't been easy to operate in India. So, you have to come up with ways to jump over the barriers. For Amazon, that has meant constructing a giant building to show the benefits you can bring to the local economy through the creation of new jobs. 2,000 people worked on site every day for over 3 years, according to the company. They used more than twice as much steel as the Eiffel Tower to build this beast. The only thing bigger is India's growing appetite for the web. In 2016, about a quarter of the Indian population used the internet. This year, over half are expected to be connected. The sharp increase is also attributed to the 4G rollout a few years ago. And if you add a rising middle class into the mix, this means more dollars spent online. In 2010, the virtual retail market brought in less than $1 billion. In 2024, it's expected to top $100 billion. And there's a lot of room to grow. E-commerce still only represents about 4% of India's total retail consumption. The pandemic appears to have further accelerated the trend toward online shopping. During Amazon's deal event last year, Prime Day, it said twice as many customers in India signed up for a Prime membership compared to the year before. Despite the growth, Amazon still faces some stiff competition, especially from Walmart, which acquired the country's largest online retailer, Flipkart, a few years ago. So, how do you go about beating a rival? Bezos has always believed that it's not about focusing on the competition, but rather the customer. This has meant appealing to the hundreds of millions of people who live in remote and rural areas. They often have to travel far to access a store or don't have many options once there. So doorstep deliveries, whether by bike or by boat, would be life-changing. To help entice these customers to sign up, the Amazon app features descriptions in Hindi, works with cheap smartphones, and payments in cash at delivery is allowed. Amazon is also trying to make its mark in the food and grocery industry because that comprises the largest part of India's retail market. It launched a service similar to Uber Eats called Amazon Food last year, delivering prepared meals in select parts of Bangalore, another tech hub. It's keen to grow Amazon Fresh, a grocery delivery service. And to further push into the food market, the tech giant partnered with a company operating major supermarket chains so that their goods are sold on the site. Amazon hopes its foray into India is much more successful than what happened in China, where it barely gained any traction despite trying for more than a decade. It threw in the towel in 2019 when shoppers could no longer buy from local sellers on Amazon.cn. The site is now limited to items available from the global store, like Kindles. Amazon couldn't compete against rivals Alibaba and JD.com that offered fast and often free shipping without any minimum order requirements.
The American giant barely talks about its Chinese business, ऑर्डर जा but रहा it's certainly not shying away Zabardast. from discussing India. This massive building symbolizes its commitment to that nation, a nation where it's invested $6.5 billion since 2014. The pandemic has also shaped a new path for Amazon India as more people take up virtual learning. It recently launched an online academy to train students hoping to get into India's top engineering schools. Becoming an engineer requires a solid base in math and computer science. To help you grasp these core subjects is a problem-solving website called Brilliant. It's free to sign up. Whether you're a student who doesn't quite understand the calculus material from class, or a professional hoping to brush up on your algorithms, my sponsor Brilliant has over 60 interactive courses in math, science, and computer science. There are no tests, and you can learn at your own pace. You can sign up with this link, which is in my description, and the first 200 people to use my link will get 20% off the premium subscription, which gives you unlimited access to all courses. थैंक यू। जी दोस्तों, ये था अमेज़ॉन इंडिया में। क्या कहती हैं? जबरदस्त, क्या क्या कहूँ, कम है। 15,000 Employees एम्प्लॉयज हैं उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि चाइना में वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना यहाँ रहा। मैसिव बिल्डिंग्स हैं और इतनी अच्छी मतलब उनकी सर्विस है। और आपने देखा कि प्रॉफिट पहले कितना कम था और अब 2021 में कितना ज़्यादा है। यानी बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया का रुख कर रही हैं और इतना बड़ा अमेज़ॉन पूरी दुनिया का ऑनलाइन शॉपिंग का एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा। और इसके कई कुछ अवेल है। अच्छा देखिए आप जरा, एक तो ग्रॉसरीज, चलिए दूसरी चीज़ें अलग हो गई, फिर ग्रॉसरीज, फिर उसके अलावा फूड। अगर आप जैसे हम फूड पार्टा यूज़ करते हैं, अगर फूड वगैरह भी आपको ऑर्डर करने तो आप अमेज़ॉन के थ्रू फूड ऑर्डर कर सकते हो। सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह उस कंट्री में। हमारे यहाँ भी अमेज़ॉन वगैरह आ चुका है, अब आया है, मतलब महीना 2 महीने हुए हैं। अच्छा, अमेज़ॉन कुछ नया नहीं था, हमने पहले से भी बहुत सारा मतलब बहुत इंडिया में। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि अमेज़ॉन का इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा मतलब इंडिया में, और अमेज़ॉन पूरी दुनिया को कवर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन वगैरह। और अमेज़ॉन का एक स्टैंडर्ड है। आपको पता है, अगर कोई अपनी शॉप अमेज़ॉन पे लेना चाहता है तो इतनी क्वालिफाइड उसको होना चाहिए उसकी प्रोडक्ट को, बाकायदा उसकी एग्जामिंग होती है। अच्छा। हाँ, मतलब मिसाल के तौर पर कोई कपड़े का बिजनेस करना चाह रहा है, अमेज़ॉन के थ्रू करना चाह रहा है वो, तो अमेज़ॉन इतनी उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है कि आप लोकल स्टफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब हाँ, और अच्छी हाई फाई, और कॉस्ट भी वैसे ही। अब कुछ यूट्यूबर्स की मैंने वीडियो देखी, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गया हूँ मैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ चुका है। अच्छा। पाकिस्तान में आ चुका है। अब पाकिस्तानियों के लिए, हाँ, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ चुका का मतलब ये नहीं है कि अमेज़ॉन आ चुका है। अब पाकिस्तानी इस फैसिलिटी से फायदा, अवेलेबिलिटी हो गई अमेज़ॉन की, पहले नहीं थी। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारी जैसे इस तरह से ऑनलाइन चीज़ें हैं ना, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें अब तक नहीं है। कहते हैं कि पेपाल एक अर्निंग का, एक विड्रॉ का और अर्निंग का तरीका होता है कि जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो वो पेपाल के थ्रू विड्रॉ करते हैं। पेपाल जो है इंटरनेशनल अर्निंग विड्रॉ करने का सबसे अच्छा एक रिलायबल वो है, वेबसाइट है। पेपाल का ऑफिस, पेपाल की सहूलत पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। कुछ कंपनी सहूलत दे रही हैं बाहर की कंट्री से ऑपरेट करके, किस तरीके से, बहरहाल वो तो दूसरे तरीके हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन के हवाले से अवेल नहीं भी। मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सरियत से ऑनलाइन से शॉपिंग करती रहती हूँ और परचेजिंग करती रहती हूँ। तो एक दफ़ा मतलब मुझे कुछ बाहर के प्रोडक्ट्स जैसे मारा कुछ हो गया और भी बहुत सारे सीरम्स वगैरह खरीदने थे। तो जब मैंने ऑर्डर करा तो वो पाकिस्तान में अवेल ही नहीं थे, मतलब वो जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे वो पाकिस्तान में वो सेंड ही नहीं करते, बेचते ही नहीं थे। तो फिर बड़ी मुश्किल से कहीं से मुझे लिंक मिला, तो अमेज़ॉन के थ्रू वो मिल सकता था, अदरवाइज इसकी अवेलेबिलिटी थी नहीं। तो मतलब मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ भी करना चाहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में अवेल ही नहीं, पाकिस्तान को बेचते ही नहीं, उसकी सर्विस नहीं है, ऐसा ये बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं अक्सर बहुत बड़े यूट्यूबर्स जो हैं जिनकी पॉलिसीज़ के बारे में सुन रहा होता हूँ, उनसे वीडियोस देख रहा होता हूँ, तो वो बताते हैं कि ये सहूलत अभी यूट्यूब ने पाकिस्तान में नहीं दी, अब ये फैसिलिटीज़ पाकिस्तानियों को अवेल नहीं है, ये ऑप्शन अभी
शॉर्ट वीडियोस का भी एक ऑप्शन है, हाँ। जैसे टिकटॉक्स वगैरह है यूट्यूब पर, अभी पाकिस्तान में अवेल नहीं है, बाद में होगा। 40 50 कंट्रीज को देने के बाद वो जब पाकिस्तान का नंबर आता है, पता नहीं पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अभी एक मॉइस्चराइजर था ड्राइवर लाइसेंस, तो मैंने उसको इतना सर्च करा कहीं पे भी अवेल नहीं था। जब मैंने डायरेक्टली सोचा कि मैं उनकी कंपनी से ही डायरेक्टली परचेज कर लूँ, तो वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी नहीं थी पाकिस्तान के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान के लिए वो अवेल नहीं, यूएस में अवेल है, इंडिया में अवेल है, लेकिन हमारे यहाँ अवेल आपको पता है पाकिस्तान में एक वेबसाइट है दराज वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन की पाकिस्तान की सबसे बड़ी, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब जाके दराज के इतने इश्यूज खड़े हो रहे हैं, इतनी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, कुछ बेचते हैं, बहुत के डब्बों के अंदर पत्थर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मतलब चीट, मतलब आप अपने काम में तो चीट ना करो। आप अगर काम करते हो, बिजनेस करते हो, अल्लाह पाक उसमें आपको रिस्क देता है, आपको 10,000 लोगों का आपसे जुड़ा होता है, इतने बड़े बड़े इदारे, इतना बड़ा नाम है। ईद पे किसी ने मतलब दराज के थ्रू ही वो एक क्यूट सा ना, मतलब क्या कहते हैं, छोटा सा चूजा था, वो उन्होंने ऑर्डर करा, जब बॉक्स खोला तो उसमें से असली चूजा निकल रहा। बताओ यार, मतलब तंग करने, अलार्म की वो नहीं होती घड़ी, वो थी अलार्म टाइप की, और ऊपर से वो क्यूट सा चूजा बना हुआ था। उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जब उन्होंने खोला, यकीन करें, मैंने वीडियो देखी, मुझे इतनी हंसी आई, और दराज वालों ने रियल चूजा इतना बड़ा 10-15 रुपए वाला सेंड कर दिया। अब दराज है या बीच में जो लोग हैं, किस तरीके से ये मैनेज कर, सर्वाइव करके आ गया, पहुंच गया। कमाल है। अच्छा, ये आपको पता है कि दराज को अली बाबा ने खरीद लिया। अच्छा, अली बाबा भी ऑनलाइन बहुत बड़ी वेबसाइट है चाइना की, तो अली बाबा ने दराज को परचेज कर लिया है, लेकिन अभी पता नहीं क्या मसले हैं नहीं है। खैर दोस्तों, बातें तो चलती रहेंगी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।